In the previous video, what we studied, that the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace, and he asked that what the cook was going to do with the vegetable scraps. So the king asked, "What are you going to do with the vegetable scraps?" He asked the cook, वो cook से पूछता है, pointing to the basket of scraps near the cook. तो cook के पास जो basket का scraps का basket रखा हुआ था, उसकी तरफ point out करते हुए, pointing means उसकी तरफ इशारा करते हुए, see, he is pointing towards the vegetable scraps. The cook replied, cook answer देता है, replied means to answer. The cook answered, they are waste, ये सभी waste हैं, we will throw them away, तो हम इन सबको फेंक देंगे. The cook said, the vegetable scraps are of no use now and they will throw that, right? But what the Maharaja said? The Maharaja said, you cannot waste all these bits and pieces of vegetables. तो तुम इन सभी को वेस्ट नहीं कर सकते. ऑल दिस बिट्स का मतलब होता है पार्ट्स. तो वेजिटेबल के पार्ट्स और पीसेस को तुम वेस्ट नहीं कर सकते. फाइंड अ वे टू यूज देम, इनको यूज करने का एक रास्ता सोचो. द महाराजा कमांडेड मीन्स ऑर्डर्ड. सो द महाराजा ऑर्डर्ड, महाराजा ने आदेश दिया. स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, मीन्स बहुत सख्ती से आदेश दिया. एंड वॉकड अवे, और चला गया. सो यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज देम. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. से स्टर्नली में आर का साउंड बहुत शॉर्ट आता है, स्टर्नली, ठीक है. एंड वॉकड में एल साइलेंट होता है, तो स्टर्नली एंड वॉकड अवे. कमांडेड, COMMAND, कमांड, ED, कमांडेड. सो कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. द महाराजा कमांडेड का मतलब होता है ऑर्डर्ड, स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली, एंड वॉकड अवे, तो वहाँ से चला जाता है, ठीक है. The cook was in a fix now. The cook was in a fix. वो in a fix means to be in a hard situation. ऐसे मुश्किल situation में फंस जाना, बुरी तरह फंस जाना. तो the cook was in a fix. The cook was in a hard situation now and kept staring at the vegetable scraps. और vegetable scraps को continuously देखता है. In a fix means बुरा फंसना, हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, जिससे बचना मुश्किल हो, ऐसी सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इन अ फिक्स. स्टेयरिंग मीन्स कंटिन्यूसली लुकिंग एट. जब हम किसी चीज़ को एक टक देखते हैं कंटिन्यूसली इन द सेम मैनर, उसको हम बोलते हैं स्टेयर करना, ठीक है. सो एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, वो वेजिटेबल स्क्रैप को कंटिन्यूसली स्टेयर करता है, देखता रहता है. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक उसके माइंड में एक आइडिया आता है. फ्लैश्ड का मतलब होता है केम थ्रू. तो अचानक कोई माइंड में आइडिया आए, तो वी कैन से दैट फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. उसके माइंड में अचानक एक आइडिया आता है. Okay, and can you guess what was the idea? The idea was of making a new dish using the vegetable scraps. तो उसका आइडिया क्या था, वेजिटेबल स्क्रैप से एक न्यू डिश बनाना. एंड ओके, सो व्हाट ही डिड, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स. और वो वेजिटेबल के सभी टुकड़ों को लेता है, वेजिटेबल स्क्रैप्स को, उसके छिलकों को, वॉश्ड देम, और उन्हें वॉश करता है, एंड क्लीन देम वेल, और उन्हें अच्छे से क्लीन कर लेता है, साफ कर लेता है, ठीक है. सो अब in the next video we will be continuing the next part. Okay, if you feel any words pronunciation you didn't understand, you can ask me. Okay, once let me read from the starting.
So once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. So in the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." "You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them," the Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits and washed them and cleaned them well. So I hope here till here pronunciation is clear. Read at least once, then we will continue in the next video. Okay.